हाँ, तो कंट्रोलर्स के बारे में हमारा डिस्कशन चालू है विजुअल फोर्स पेज के ऊपर में. And then what you have seen is like there are three different types of controllers. See, whenever we wanted to implement any of the standard functionality, ठीक है, जैसे कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर आप देखते हो, and if you go to any of the objects, for example account, if you rather go to the cases, है ना, so there are certain there are certain kind of buttons, and they are by the way having some of the functionalities that are fixed. So for example अगर आप न्यू बटन प्रेस करते हो, या फिर if you press the save button, है ना, edit button, cancel button, the kind of functionality is actually, we can say कि these are some of the functionalities that we can see onto every page layout. So अगर if we wanted to implement, if we wanted to implement कि ऐसा कोई functionality हमारे भी visual force page पर होना चाहिए, then we could directly grab those functionality from standard. ये था सबसे पहला प्रोग्राम जो हमने सीखा. अच्छा, कल जो फिर हमने लाइट आ गई है, सो मैं एक बार देख लेता हूँ इंटरनेट हुआ है, एक सेकंड के लिए डिस्कनेक्ट हो सकता हूँ. ठीक है, सो इज एवरीथिंग फाइन विथ योर एंड गाइस? कैन यू प्लीज वंस अगेन acknowledge me because I just have shifted my internet. Is everything is Yes, sir. okay with your end? Okay, Yes, sir. that's great. That's great. चलिए, so what I was saying is, देखिए, whenever we wanted to implement the standard functionalities, तो Salesforce कैसा है? Salesforce में all of the standard functionality जितनी भी है वो सारी पहले से लिखी हुई है. You just require to grab those functionality. तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि आप अपने Visual Force पेज पे स्टैंडर्ड कंट्रोलर यूज करें. अच्छा, थोड़ा सा पीछे चलते हैं. स्टैंडर्ड कंट्रोलर इफ आई वांटेड टू इम्प्लीमेंट, तो उसका कीवर्ड क्या लिखना पड़ता है हमको? स्टैंडर्ड कंट्रोलर नाम से ही कीवर्ड रहता है. सो लेट्स गो विद दिस. तो इन दिस पर्टिकुलर पेज, ये जो हमारा पेज टैग है, हियर वी हैव रिटन लाइक स्टैंडर्ड कंट्रोलर equals to, in the double inverted comma, account. That means all of the standard functionalities, that are available with this class account, because account is an object, account is also a class. This we have already studied. ORM आप याद करिए. ORM में हमने देखा कि every class, every object, for that object there is one database table inside database.com, and there is a business logic class also have been written. And where is this class? This class is present in the Salesforce metadata, right? So every object what we have seen so far, like the object belongs to the standard, the object that belongs to the custom, every object by the way is a class. So account is also a class, it's a standard class, and wherever you wanted to implement the functionalities, so you just require to incorporate this inside standard controller. So this was like, if my, इसका simple मतलब, अगर मुझे आप लोगों को देखिए एक लाइन में अगर मुझे समझाने की जरूरत पड़े, what I could say कि if your business logic, मतलब ये तो आपका फ्रंट एंड पार्ट हो गया, बट इफ योर बिजनेस लॉजिक is there, if you are importing, if your business logic, if you are importing, if you are inheriting, जिसको inheritance जो हमारा word होता है object oriented programming में, so if you are inheriting whatever the business logic you require, and if you are inheriting it from a standard class जैसे account, contact, hiring manager, positions, है ना, then you will use the standard controller. Why? Because we are not building any standard, we are not building any business logic in such case. What we are doing, we are rather, we are rather importing it. We are rather importing it. We are what doing? We are inheriting it from one of the standard class. So there is the, there we will going to use the standard control, and this is the keyword for that. And then second thing what we have studied, second thing was the custom control. Now if you built up your own custom logic, right, and you wanted that onto that usual force page, you wanted the whole business logic should come from the class what you created, जो आपने कस्टम क्लास बनाई है, आप चाहते हो कि फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्लास, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्लास आपका जो बिजनेस लॉजिक है दैट शुड कम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्लास, a controller class. Then we actually use the custom controller. So what is the keyword for custom? For standard controller is the whole thing, standard controller. But if you wanted to, if you wanted to incorporate custom controller, then there is only one keyword, that is controller.
ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टाइप एंड दैट इज एक्सटेंशन. अब अगर स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड के लिए यूज होता है, कस्टम कस्टम के लिए यूज होता है, तो फिर सवाल ये उठता है कि एक्सटेंशन किस लिए यूज होता है. बिकॉज अगर मैं स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटीज लेना चाहता हूँ, then in that case I will be using that standard controller. If I wanted to, if I built up some kind of custom business logic and then I wanted, I wanted to have that business logic to be incorporated in my module, ऐसी सूरत में मैं किस में जाऊंगा, कस्टम कंट्रोलर पे जाऊंगा. लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक्सटेंशन कंट्रोलर फिर कहाँ यूज करेंगे हम. ठीक है, आओ देखो. So extension controller is a combination of standard as well as custom properties. तो अगर कभी, by the way, if you are in a need where onto the same visual force page मैं standard as well as custom दोनों की functionalities को demand करता हूँ, then I will go with the extension controller. By using this feature, we can reference both the standard functionalities and the custom functionalities. आप standard functionalities as well as custom functionalities, मतलब standard classes जो आपके standard objects के लिए हैं और आपकी अपनी कोई custom class, दोनों को आप यहाँ पे refer कर सकते हो in a single visual force page. So this is uh, the extension control. अब इसमें एक चीज का जो है वो हमें ध्यान रखना पड़ता है ना. We just require to note for one thing. What is that? कि whenever you are using extension controller, और जहां ऐसा है कि आप स्टैंडर्ड और कस्टम दोनों कंट्रोलर्स को यूज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड एंड कस्टम दोनों क्लासेस को यूज कर सकते हैं. सो इनसाइड द विजुअल फोर्स पेज, इनसाइड योर विजुअल फोर्स पेज, यू कैन यूज ओनली वन स्टैंडर्ड कंट्रोलर, but as many as you wanted, one or more than one custom controllers, but then the name would not be the custom. जैसे जैसे मैं आपको बता रहा था कि कस्टम कंट्रोलर के लिए नाम क्या होता है, कंट्रोलर. स्टैंडर्ड कंट्रोलर का नाम तो स्टैंडर्ड ही कंट्रोलर है, लेकिन इफ आई वांटेड टू इनकॉर्पोरेट दिस क्लास, ये एक कस्टम क्लास थी, तो उसके लिए जो कस्टम कंट्रोलर के लिए जो कीवर्ड है उसका नाम है सिर्फ कंट्रोलर. तो यहाँ जैसे एक्सटेंशन कंट्रोलर में वी गॉट दिस फैसिलिटी दैट we could have a standard as well as a custom class. तो स्टैंडर्ड कंट्रोलर के लिए तो कीवर्ड स्टैंडर्ड कंट्रोलर ही रहेगा, एंड कस्टम के लिए यू वुड नॉट राइट ऑन द कस्टम, इट वुड बी एक्सटेंशन. तो अब अगर आप ये फॉर्मेट देखो, सिंटैक्स को ध्यान से देखो, दिस इज जस्ट अ थ्योरेटिकल कांसेप्ट. ऑफ कोर्स वेयरएवर इफ इट्स रिक्वायर समवेयर, एक प्रोग्राम आएगा आगे चल के, जब मैं अभी तो नहीं देखी, जब मैं इंटीग्रेशन पे लेके जाऊंगा आपको, दैट टाइम देयर विल बी वन प्रोग्राम जहां पे हम एक्सटेंशन कंट्रोलर को यूज करेंगे. ओके, तो अभी आप इसका सिर्फ फॉर्मेट देखो. फॉर्मेट कैसा है कि अपेक्स पेज, माय पेज टैग, स्टैंडर्ड कंट्रोलर वी कैन यूज ओनली वन स्टैंडर्ड कंट्रोलर. तो एक स्टैंडर्ड कंट्रोलर कोई भी एक क्लास का नेम, फॉर एग्जांपल अपेक्स पेज स्टैंडर्ड कंट्रोलर अकाउंट, and then extension controllers. Extension controller, now you can give name of any number of the classes separated by the comma. That is all. तो बस एक चीज याद रखना है आप लोगों को, एंड दिस इज वन ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चन ऑफ कोर्स. what exactly, first of all they ask you about the controllers, how many different types of controllers are there onto the visual force page. So you need require to say there are three different types of controller that we could use on the visual force page. Of course they are like standard controller and then custom controller and then extension controller, and you also require to elaborate that whenever we wanted to use the kind of standard functionalities, then we go with your standard controller. And whenever, for example, we build up our own custom functionality in some sort of class, and then we wanted to have that class, then we go with the custom. Whereas if we have a special kind of requirement where we wanted to have both functionalities, standard as well as custom, then we require to go with the extension controller. But then when you are using the extension controller, you must be careful about this thing, that while using the extension controller, although we can use standard as well as custom, but only one standard controller is allowed. So if you have in the standard controller, if you have written account, then you can only insert account over here. But for the custom classes, the keyword is extension. It's just not custom. The keyword is extension, and with the keyword extension, now you can write down any number of the classes over here, any number of the custom classes over here, class 1, class 2, dot dot dot, like this. Okay, so this is what the format looks like to be, this is what the syntax looks like to be.
ठीक है. So this was our extension controller. Now actually I required to take you to some of the basic things like database interaction. That is the important thing. But before going to the database interaction, there's a small thing, there's a small tag we should understand, and that is input field. How to use the input field tag, that is one of the thing. So what I am doing right now is over here I will be implementing one of the visualforce program, visualforce page, to implement the kind of basic functionality with the basic calculator functionalities, so that you could you could get yourself be hands on, you could get the hands on of this particular tag, input tag. So what is the input field tag? Let's see over there onto the visual force page कि क्या होता है, and then what are the properties which is required to go with the theory. And this tag actually used to whenever we wanted to take some input from the user, like this, if you press this new button, these are some of the interfaces over here. These are some of the interfaces, like this interface, so this interface, and this interface like this also. So whenever we wanted to design a such kind of interactive user interface where you asking something like enter your name and then your user will be entering something over here. So this kind of this kind of interface usually is called as input field tag, right? So let's have some understanding of this also, because whenever we are designing any of the user interfaces, this is very common thing. This is very common thing that we are asking the user to supply some inputs from this particular user interface, right? That's the reason we should be aware of this particular tag, input field tag. तो क्या होता है basically? Input field tag क्या करता है? It allows the user to enter some of the values. ठीक है? The input tag is used to represent the object fields onto the user interface, of course. So while binding the field name, one second. While binding the field name, whatever, we actually require, to look up for few of the things, that is the data type and the properties, and that everything, don't worry, that everything I'll be going to explain you. I'll be going to explain you directly with this program. Okay, directly with this program. Okay, so let's see क्या होता है. चलिए एक प्रोग्राम ले लेते हैं, एंड देन इनपुट फील्ड टैग और इनपुट टेक्स्ट वगैरह सब कवर करके देता हूँ मैं, सो दैट वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज अ मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसीडर्ड इन विजुअल फोर्स पेज, एंड दैट इज डेटाबेस इंटरेक्शन. तो चलो वहां तक बाद में पहुंचेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो विद दिस. So let's understand with the basic calculator program, and design a visual force program to implement the basic calculator and perform some of the buttons like addition, subtraction, multiplication, division, modulus. Okay, so let me create one of the visual force page with the name called as basic. Okay, so with the URL technique, जो हमारी URL technique है, with that I'm creating one page, apex slash basic calculator page. Okay, so with this name I'm just pressing and entering, so it will prompt me that there is no such page. There is no such page with this name, and we got this link that we could create one of the similar kind of page. So I'm just clicking on this. So now we got this. And let's just remove the default coding here. So we have Apex page. Let me write down some of the things. Okay, so साइड बाय साइड लेट मी ऑल्सो बिल्ड अप द कंट्रोलर. तो मैं यहाँ पे कस्टम कंट्रोलर बना रहा हूँ जिसका नाम रहेगा बेसिक कैलकुलेटर. ठीक है, and then setup equals to false, sidebar equals to true or false, whatever we write down. Let's see all of that. So setup equals to false. Setup, I don't want it to see setup. And sidebar को भी false कर देता हूँ. चलो sidebar equals to like false. And show header, for example, I wanted to show the header, so show header equals to true. Any more thing? Tab style अगर देना है तो दे सकता हूँ. Let's leave it for now. ठीक है. So with all this, जैसे ही मैं सेव करूंगा, because we haven't created any such class, we don't have in the Apex, we don't have any class with this name, so it will be prompting one error. लेकिन साथ ही वो हमको बोलेगा कि हाँ आप इस लिंक पे क्लिक करो, तो either you can create a class with sharing or without sharing. चलो आज ये बात बता देता हूँ मैं आपको. With sharing और without sharing का एक छोटा सा कंसेप्ट है. क्लासेस दो तरह की होती है. अपेक्स क्लासेस दो तरह की होती है. एक होता है विद शेयरिंग क्लास, दूसरा होता है विदाउट शेयरिंग क्लास. ठीक है, विद शेयरिंग, विदाउट शेयरिंग. नाउ ये जो आपका है, ये है आपका द फर्स्ट लिंक इज एक्चुअली विद शेयरिंग. सॉरी, द फर्स्ट लिंक इज एक्चुअली विदाउट शेयरिंग. द फर्स्ट लिंक पब्लिक विद शेयरिंग एंड देन पब्लिक विदाउट शेयरिंग. ठीक है, तो ये जो विदाउट शेयरिंग वाला, जैसे यहाँ लिखा है विद शेयरिंग, तो ऑब्वियसली दूसरा जो है ना, दूसरा है आपका विदाउट शेयरिंग.
विदाउट शेयरिंग, विदाउट शेयरिंग। अब ये विद शेयरिंग और विदाउट शेयरिंग का छोटा सा एक कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि अगर आप विदाउट शेयरिंग करते हैं तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज सिस्टम मोड। विदाउट शेयरिंग अगर आप करते हो किसी क्लास को, दिस क्लास इज कॉल्ड एज सिस्टम मोड। Without sharing is called as system mode, and with sharing is called as user mode. Now please write it down. Please write it down. I'll try to find out some suitable theory for this. Otherwise, you can also Google and understand this. It's a little bit a theoretical concepts. So try to Google this, and even you could find out some theory. If you find it out, please post it to the group also. So your system, your without sharing is always called as system mode, and with sharing is basically called as user mode. So whenever we make a class as a with sharing, अगर हम कोई class को sharing बनाते हैं, then we also require to give कि ये class को मुझे किस किस user को share करना है, ठीक है? We can decide that this class should be shared with the user 1 and then user 2 and then user 3, ठीक है? You know one thing that let me dig into the concept little bit more so that you can understand. See, you know one thing that there could be different there could be different users, right? There could be different users inside an organization. Now for example, one of these is development user. So let me try to go with the profile of development user, okay? And I'm trying to edit the profile. Now see, this is fully in our control whether this user can write down the apex or not. If you have give this permission to the development user author apex, then he could definitely interact with the metadata. I mean, he could write down the classes and everything. He could save up the classes, he could interact with the metadata, and of course write things like that. If you won't give him permission, he cannot be an author of the apex. He cannot write down the classes, he cannot save the classes and everything. He cannot write down the triggers, he cannot save the trigger, he cannot create the test classes and everything. He cannot go to the visualforce page and write down the controller classes. Why? Because for all this one permission is required, and that is author apex permission. So if you grant this permission to the development user, now this user can write down everything like you also. And see, for example, if you are creating a class, this is my class. There are 5 to 6 user, development user, there are testing user, there are manager user, there are customer user, there are chatter user, integration user, security user. There are so many users have. And for example, all of these are users I have created. And maybe all of them are having this permission. Maybe all of them are having this author apex permission. Let's understand. Okay, they all are having this license, Salesforce license. And they all are having this permission of author apex. Now to this class, whether they can access this class or not, that is again one thing. So if you do it like without sharing, जैसा कि हम normally करते हैं, something called as system mode, then this class is only available to the creator. This class is only available to the creator by default. For example, अगर आपका training batch user is getting login, then he could access and make modification onto this class only, and he could run the class, he could write down the test classes for that, because he's the creator. This is what the system mode is without sharing. It's a very small concept. I was telling you this कि मैं किसी दिन ले लूंगा, चलो मैं आज ही decide किया, आज ही समझा देता हूँ. It's a very small concept. And for example, the same class, my same class, if I make it with sharing, ठीक है, if I make it with sharing, then the one who is having this author apex permission, they can access. For example, if these many users are having, ठीक है, if these many users are having, these 3 users can access this class. And if these 3 to 5 users, if they don't have this, then they are not they cannot access this class. That is what the concept of with sharing. So whenever we do the with sharing, we can also decide कि class publicly, a class is shared to whom, is shared to him. We also require to decide कि ये class को किस को share करना. That I was trying to tell. So it's all, there are 2 to 3 permissions required for this. One of them, the most important permission, is the author apex permission. The one who is having the author apex permission, the class is accessible to him. The one who is not having the author apex permission, these classes are any with shared class. For example, if this, if I remove this permission from the development user, by the way, तो development user को any with shared class जो है ना वो नजर नहीं आएगा, and he cannot do anything with that class. So that is what the thing is. This is the very small concept. यही है आपका with sharing और without sharing के बीच का फर्क. अब ये मेन है. अब क्या करो, थोड़ा सा ना इस बारे में और एक्सप्लोर करो. आपकी बैच के साथ एक अच्छी चीज मैंने ये देखा है कि काफी एंथुसियास्टिक लोग हैं यहाँ पे. 2-3 लोग हमारी बैच है, काफी एंथुसियास्टिक हैं. दे ट्राई टू फाइंड आउट
so many things. Someone of you had asked me about the trigger for roll up summary, तो वो मैंने आज मैंने create कर लिया है, and I am going to send you the code for that also. Someone of you, I think Chetan or somebody has asked me for that code, तो वो मैंने आज ही implement किया था, आज टाइम था थोड़ा सा मेरे पास में, तो रोल अप समरी का मैं कोड आप लोगों को भेजता हूँ. द सेम यू वांट, उसके लिए आपको एक फील्ड्स बनानी, कुछ फील्ड्स बनानी पड़ेगी. इट्स बिटवीन अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट, है ना. तो अकाउंट में जैसे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट एसोसिएटेड, ऐसा एक फील्ड बना के उसके अंदर जो डेटा आएगा दैट विल बी गोइंग टू बी गेट ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम द ट्रिगर. तो ट्राई टू इवेलुएट दैट. अगर नहीं समझा तो ठीक है, मैं बता दूंगा कोड, कोई टेंशन नहीं है. बट एक बार जरा सा देखो, आप लोग कोड देखो, समझो, इम्प्लीमेंट करो, ट्राई टू डू सम ऑफ द रिसर्च ऑन दैट, है ना. तो वो. और एक चीज जो किसी ने और पूछा था शेयरिंग मैकेनिज्म का, तो फिलहाल मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, बट वेन एवर आई गॉट द टाइम मैं कर लूंगा उसको भी. ओके, एनीवेज लेट्स कम बैक टू द टॉपिक वंस अगेन. सो हम यूजुअली क्या होते हैं, वी यूजुअली गो विद दिस. इफ यू, ऐसा कुछ नहीं, इफ यू वांटेड यू कुड इवन गो विद दिस, अगर मैं एक विद शेयरिंग क्लास भी बनाता हूँ, इवन आई गो विद दिस. Organization administration has law we require temporary law organization setup, however the administration. Okay, okay. uh, Basic calculator. Okay, it's created. I don't know what was the message for what this message was all about, but anyway the class is created, my class has been created, and here's something with sharing bus. This is what with sharing. So now whosoever is having that author apex permission can see my class. Out of every user inside my organization, जिसके पास भी author apex permission है ना, only those people can see my classes, otherwise. बस इतना सा अंतर है बात, और कुछ भी नहीं. If I remove this, that becomes without sharing. That's it. That's it. This is the only concept. Okay, this is the only concept with over here. चलो, so public class basic calculator मैंने side by side prepare करनी है, so that's the reason I created a controller over here. चलिए, so let's create the page. first of all page बनाते हैं और उसके बाद आपको एक calculator बनाना है छोटा मोटा, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह कुछ कर पाए. so apex for example like section header, section है, ठीक है. And the title goes like calculator, and then subtitle. subtitle title छोटा होता है, subtitle बड़ा होता है. Basic mathematical calci, something like that, right? Anyways, okay. Let me try to save this and see what happens. So we have this basic mathematical calci, अच्छा नहीं लगा, calculations like this. And let me now open a form, okay, because whatever we do inside a form, right, and try to implement only one form. ठीक है, अभी मैं व्यू स्टेट पे आऊंगा कुछ दिन बाद, तब आपको समझ में आएगा. सो फॉर्म आईडीज अभी नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग ओनली वन फॉर्म. आगे चल के अगर कभी मल्टीपल फॉर्म लगे तो आईडीज देना, अदरवाइज. बट देन ट्राई टू इम्प्लीमेंट ओनली वन फॉर्म पर लॉजिक. नेक्स्ट अपेक्स पेज ब्लॉक, ठीक है. अपेक्स व्हाट एवर वी डू इनसाइड अ पेज ब्लॉक. अपेक्स पेज, पहले पेज ब्लॉक, उसके बाद पेज ब्लॉक सेक्शन, ठीक है. अपेक्स पेज ब्लॉक. Now let me give the titles and everything. So apex page block, let me give the title. Title equals to, for example, calculator. Yeah, calculator. ठीक है. Apex page block and calculator block like this. Calculator block. Now inside page block, let me now open the page block buttons. ठीक है, मैं कुछ buttons यहाँ पे बनाता हूँ. First of all, I require to give this apex command buttons, apex command button, and then let's give the locations also, है ना. command button and command button के बाद में आएगा ना apex page block buttons आएगा. apex page block buttons, उसके अंदर आएगा command. So apex page block buttons, and then I require to give the locations also. apex page block locations, location would be both. मुझे दोनों जगह buttons चाहिए. bottom, ठीक है. At the bottom I wanted this. Now let me एक मिनट में visualize कैसा हो रहा है देख लेता हूँ, ठीक है. So page block, within the page block buttons, now let me create the buttons. So
अपेक्स एंड देन कमांड बटन्स, ठीक है, command button and then value. The first would be like addition. The first would be like addition. Okay. एक्शन लगता है बट अभी मैं उसको थोड़ा सा ब्लैंक रखता हूँ, आगे बताता हूँ आप। एक्शन लगता है, लेट मी कीप इट ब्लैंक फॉर नाउ। अभी मैं इसके थोड़ी देर बाद जब मैं इधर कोडिंग करूंगा तब आपको यहाँ साइड बाय साइड लिखा। एंड देन आफ्टर दिस I wanted to have like addition. The next operation I wanted to implement is subtraction. 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 And then the next I wanted to implement is like multiplication. Multiplication. The next I wanted to implement is the plain division. 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 And then for example I wanted to implement the modulus division, right? तो उसको लिखता हूँ मैं modulus division. मैं सिर्फ modulus ही लिख देता हूँ, ठीक है? Let me now try to save this and see how does the page looks like to be. Okay, so here here I will be having this. What I will be doing over here is, for example, my input text use करता हूँ. I'll be telling the user to enter, for example, two data. So enter the first number, enter the second number, something like that. And then I after pressing the addition एक result और दिखा देते हैं, एक और text field बनाते हैं result नाम की. तो after pressing addition, the addition या subtraction जो भी है, तो accordingly अभी तो कुछ नहीं होगा because I haven't created any logic behind the buttons. ये buttons के behind पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है अभी, of course, है ना? तो इसका कोई लॉजिक ही नहीं है, तो these are logicless buttons right now. But I will be यहाँ पर मैं एक्शन अभी डालूंगा बाद में कि आफ्टर परफॉर्मिंग एडिशन व्हाट शुड हैपन। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे मुझे बिजनेस लॉजिक यहाँ क्रिएट करना है पहले, राइट? वो हो जाता है यहाँ पे क्रिएट, तो फिर मैं अकॉर्डिंगली उसको यहाँ पे कॉल कर लूंगा। राइट नाउ आई एम जस्ट बिल्डिंग अप द फ्रंट एंड पार्ट। अभी मैं सिर्फ फ्रंट एंड बना रहा हूँ, ठीक है? तो ये हो गया हमारा बटन्स का सेक्शन, क्लियर हो गया। चलो अब एक पेज ब्लॉक सेक्शन जो है विद इन द पेज ब्लॉक, पेज ब्लॉक के अंदर ही मैं एक पेज ब्लॉक सेक्शन भी क्रिएट करता हूँ। अच्छा, बार बार देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, पेज ब्लॉक सेक्शन और पेज ब्लॉक बटन्स, दीज आर चाइल्ड कंपोनेंट्स टू होम पेज ब्लॉक आपका पप्पा है, उसके अंदर ये दोनों सेक्शन है, ठीक है? दीज आर द टू चाइल्ड कंपोनेंट इनसाइड द पेज ब्लॉक। चलिए, तो आप इसको ऊपर करो नीचे करो, दैट डजंट हर्ट्स एनीथिंग, ठीक है? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो पेज ब्लॉक सेक्शन, फॉर एग्जांपल टाइटल वुड बी लाइक calculator section would be more appropriate, calculator section. And columns, चलो एक ही कॉलम रखता हूँ अभी for now. I'm putting one column. Collapsible, make it true. Collapsible, make it true, ठीक है? And then inside this page block section, let me now अब मैं यहाँ पे apex input text field, so input text field, text input text, ये वाला, ठीक है? I'm taking this input text, ठीक है? Input text and then लेबल मतलब अभी समझ जाएगा। लेबल मतलब होता है, अभी देखो, एंटर दी हटा देते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है? दिस इज माय लेबल, लेट्स सी हाउ डज इट लुक्स लाइक टू, पहले देखते हैं कैसा दिख रहा है। एंटर द फर्स्ट नंबर। अच्छा, समटाइम्स ही व्हाट हैपेंस, यहाँ अंदर में थोड़ा सा ऐसा ना ब्लर फॉर्म में कुछ लिखा रहता है ना? ब्लर फॉर्म में, तो वो भी आप दे सकते हो। कैसे दे सकते हो? एंटर द फर्स्ट नंबर, यहाँ पर आपको एक उसका एक टैग होता है HTML प्लेस होल्डर, HTML डैश है शायद, प्लेस PLACE होल्डर, HOLDER, HTML प्लेस होल्डर फॉर एग्जांपल इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर, ठीक है? ट्राई टू सेव दिस एंड सी व्हाट हैपेंस। देखो ये इस तरह से, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। दिस कुड बी वन ऑफ द हेल्प अगर हमें कभी ऐसा कोई इंटरफेस बनाने की जरूरत पड़ रही है कि वेयर हालांकि ये यहाँ पे नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन मैं आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि हाँ देखो भाई ऐसा भी होता है। इफ यू आर बिल्डिंग अ सच काइंड ऑफ इंटरफेस जहाँ आप कुछ एडिशनल हेल्प देना चाहते हो यहाँ पे कि प्लीज एंटर द फर्स्ट नंबर ओवर हियर, समथिंग लाइक दैट, देन यू कुड यूज दिस HTML प्लेस होल्डर। ये HTML ही है, दिस इज HTML टैग एक्चुअली। नाउ सेम थिंग लाइक एक ही कॉलम बोला है मैंने, तो इसके नीचे आएगा, साइड में चाहिए क्या?
लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिजाइन दिस इंटरफेस, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करने का। Second interface, and let's see what happens. Either I can do it like this or maybe like this also. हाँ, I think ये भी ठीक ही लग रहा है। First number, enter the first number, enter the second number. I think this also looks a little bit appropriate. चलता है, ऐसा भी चलता है। ठीक है, उसके बाद में अब ये था इनपुट। अभी मैं जब ये दोनों एडिशन, ये नंबर यहाँ फर्स्ट करेगा एंटर, यहाँ सेकंड करेगा, एडिशन करेगा या सब्ट्रैक्शन जो भी प्रेस करेगा वो, तो अकॉर्डिंगली आई आल्सो वांटेड टू डिस्प्ले द रिजल्ट। तो उसके लिए इनपुट फील्ड नहीं आएगी, उसके लिए आपका आउटपुट आता है, कुछ आउटपुट लेबल। एक बार मैं देख लेता हूँ, अपेक्स आउटपुट, आई थिंक आउटपुट लेबल, दिस वन, अपेक्स आउटपुट लेबल, लेबल I require few things more over लेबल, एग्जाम्पल आईडी। ठीक है, आईडी दे देता हूँ मैं, आईडी का यूज बताता हूँ मैं आपको। आईडी का यूज क्या रहेगा ये मुझे री रेंडरिंग के लिए यूज होगा, मैं बताता हूँ इसका मतलब कि कहाँ पर यूज होगा। री रेंडर क्या होता है बताता हूँ आपको, बताता हूँ, फिलहाल इतना ही। एंड देन रिजल्ट आफ्टर ऑपरेशन रिजल्ट, ऐसा कुछ ऑपरेशन रिजल्ट इक्वल्स टू something like this, something like this. Let me try to save this and see क्या होता है। ऑपरेशन रिजल्ट इक्वल्स टू दिस, तो थोड़ा सा बोल्ड वगैरह कर लेते हैं। Even I would like to display the result over here. रिजल्ट जब मैं डिस्प्ले करूंगा उसको भी बोल्ड करना है। ठीक है, ठीक है। हियर आई वुड बी प्रिंटिंग रिजल्ट, यहाँ पे मैं रिजल्ट प्रिंट करूंगा, डोंट वरी, अभी तो कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, बट हियर आई वुड लाइक, यहाँ पर मैं कोड लेके आऊंगा वो जो कि रिजल्ट प्रिंट करेगा। क्या हुआ, must be terminated with the ending tab। बोल्ड एंड बाय बोर्ड का देख रहा है क्या, या I need to do it like this, bold and by bold, yeah। ऑपरेशन रिजल्ट जो भी है दैट आई विल बी टेकिंग इट इनटू, ठीक है। आई कुड इवन टेक इट ऑन द सेंटर, बट उसके लिए मुझे HTML टैग लगाने पड़ेंगे। आई कुड, और रादर मुझे CSS लिखना पड़ेगा, नो आई कुड डू दैट आल्सो। चलो, तो आई थिंक वी आर नाउ रेडी विद द फ्रंट एंड पार्ट। अपना फ्रंट एंड डेवलप हो गया, दिस मच इज द फ्रंट एंड, दैट समवन कुड एंटर समथिंग ओवर हियर एंड समथिंग ओवर हियर एंड ही कुड प्रेस द एडिशन बटन, सब्ट्रैक्शन बटन। अब ये पूरा पेज रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। इसी के लिए मैंने आईडी दे रखी है वहां पे, इसके साथ मैंने एक आईडी दे रखी है। तो वो अभी पहले आपको उसका पर्पस क्या है वो बताऊंगा मैं, ठीक है। तो अभी तो कुछ हो नहीं रहा है, बिकॉज नथिंग इज हैपनिंग, बिकॉज वी हैवंट रिटन एनीथिंग फॉर दिस कोड, हमने इसका बैकएंड तो लिखा ही नहीं है। तो लेट्स नाउ राइट डाउन दैट पार्ट, है ना। अब उसके पार्ट पे चलते हैं अपन, चलो। तो अभी क्या करते हैं कि क्लास फॉर्म करते हैं। तो जितने भी आपने यहाँ पे, जितने भी आपने ये फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर, रिजल्ट वगैरह जो कुछ भी है, हियर वी रिक्वायर टू रिप्रेजेंट देम ऑन टू अ वेरिएबल्स, हमें इसे वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करना है। सो व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर, पब्लिक रिटर्न टाइप, अपना पब्लिक उसका एक्सेस स्पेसिफायर इंटीजर, and for example my first number, ठीक है, this is my variable। and you know one thing I told you, whenever we wanted this functionality कि ये variables जो है इनकी values आपस में ट्रांसफर हो, तो we require to make a use of getter and setter functions, ठीक है। तो हर वेरिएबल के आगे आपको लिखना पड़ता है get and set। सेकंड इज इंटीजर, सेकंड नंबर, SECOND, सेकंड नंबर, ठीक है। and again the value of get and set, and then a result, of course, so public integer result and then get and set। so I declared 3 variables, ठीक है,
तीन वेरिएबल्स मैंने डिफाइन करे हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और आपका रिजल्ट। चलिए, इसके अलावा मैं कुछ मेथड्स बना रहा हूँ यहाँ पे टू परफॉर्म द एडिशंस, टू परफॉर्म द एडिशन सब्ट्रैक्शन, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन उसके लिए। तो मेरी सबसे पहली पब्लिक वॉइड, ठीक है, एडिशन, माय नेम ऑफ द फर्स्ट मेथड इज एडिशन, ठीक है, पब्लिक वॉइड एडिशन। हियर व्हाट आई वांटेड टू परफॉर्म कि result should equals to this number, first number, let me just copy, first number plus second number, ठीक है, first number plus second number, this I wanted, ठीक है, whenever this function is being called, it should perform the addition of first number and the second number and then store it back to the result, ठीक है, store it back to the result, that is what I want, ठीक है, okay. Now the next function, let me just copy the whole thing, my next function, public void, let me give the name as to be subtraction. Here what we wanted to perform the mathematical subtraction of these two numbers, right? Here we wanted to perform the mathematical subtractions. Okay, the next is like I wanted to implement the functionalities of multiplication, okay, multiplication. So it should ideally perform the multiplication, so I'll be using this asterisk operator. You know this is a mathematical operator, asterisk operator, right? And the next, after this let me have one more. So the next is like division, normal division, division, okay, division. और exception handling अभी मैं पढ़ाने का हूँ, try and cache पढ़ाऊंगा, तब we will be using this whole thing inside try and cache. तो अगर कोई division में by the way somebody attempted कि अगर हम divide by 0 करते हैं तो how to handle that situation and everything, तो उसको हम लिखेंगे आगे चल के, ठीक है। अभी मैं plain division बना रहा हूँ and then modulus, mod, ठीक है, mod. So it would be like यहाँ पे आपको math.mod function use करना है, so math.mod, ठीक है, and then you need to give both of the values. So I'll be giving the value of first number, the first number, and then the comma my second number. So you need to perform the mathematical modulus operation of these two numbers, ठीक है, second number. Here I have a yes, okay. So my class is ready, my class is now ready, right? एक बार और देख लो आप पूरा. What I have done, I first of all जितने भी variables आपको लग रहे हैं, ठीक है, first of all define all those variables, first of all define all those variables जो भी आपके इसमें लग रहा है, ठीक है. So I was requiring first number, second number और जो भी result है, तो accordingly I decided कि इनका data type integer रहेगा, and moreover every variable should be defined with getter and setter method because we wanted to interchange the values from controller to class visualforce page, ठीक है. And then I have created few of the methods over here, right? I created few of the methods over here, ठीक है. So what I will be doing, like अब मैं वापस चलता हूँ अपने पेज पर. यहाँ पे जैसे कि you can see that after pressing addition nothing was happening, right? After pressing addition nothing was happening. So because there was no action associated to this addition. There was no action associated to this addition button. You created the button, you created the front end part, but then it was missing. What it was missing? The logic, the business logic that was missing. Now I have written one of the business logic. Inside one of the function called as addition. Right? I written one of the function. I have created this business logic inside one function called as addition. So how to call this method inside this, but after pressing this addition, how should this method should be get called? There is a tag for that. And that is not, there's a property for that, and that is action. ठीक है, action. तो action should always be written like this. ये merge field का format अपना बहुत ही essential है, ठीक है. What I wanted this function, so I'm just copying the name of this function, and I'll be pasting it over here. I'm just pasting it over here. ठीक है, I'm just pasting it over. ठीक है, and then let me do the same thing over for everything. Let me copy this. For this subtraction, I wanted to have this action.
I'm converting that also, don't worry. For the multiplication, I wanted to have this action. For division, I wanted to have this action. For modulus, I wanted to have this action. Now, one by one, let me copy the names of the function and paste it over there accordingly, right? Subtraction, I wanted it over here. Multiplication, I wanted it onto the multiplication button. I wanted this function should be get called. And then division, I wanted this function should be get called after pressing this button. So I am putting it over here. And then my mod. Let me not use the mod because that could be a little bit confusing. Modulus. Mod actually is a keyword. Modulus. It might give me the error, otherwise not. Okay. So I'm just avoiding that confusion. Modulus. And let me save this first of all over here. Modulus. Yeah. Okay. What's happened? What is happening? Copy and here I should paste it. Okay, let me check it out. For addition, it's addition, subtraction, multiplication. For multiplication, division, modulus is modulus. Now let me try to save this code. Let me try to save this code. Okay, so logic also have been built. There are only few things that are left. First of all, let's understand the operation, and then how to. There might be few drawbacks. यहाँ पर एक drawback रहेगा अभी. Then how to remove that? वो मैं आपको बताता हूँ. First of all, let's understand. चलो, 10. ठीक है, एंड 20 और प्रोबेबली या 20. ठीक है, एडिशन. ओके, नल पॉइंटर एक्सेप्शन. रिजल्ट के तो कुछ लिखा ही नहीं मैंने. यस ऑफ कोर्स इट्स नल पॉइंटर एक्सेप्शन. आई हैव रिटन एवरीथिंग फॉर दिस, बट व्हाट अबाउट रिजल्ट? अरे रिजल्ट का क्या? रिजल्ट का क्या? वन सेकंड गाइस. व्हाई वी वर गेटिंग व्हाई वी आर गेटिंग दिस एरर? बिकॉज आउटपुट जो आ रहा है आपका रिजल्ट पे आ रहा है, एंड देन मैंने रिजल्ट ही वहां पे स्टोर नहीं करा. So in the same way, let me, यहाँ पे I wanted to print the result over here. So how you are going to print? Again, the format of merge field, any dynamic assignment, you need to print it like this only, right? Any dynamic assignment should always be enclosed like this only. Now let me try to save this code. Okay, and then let's implement once again. So it's like 10 and the second number is 20. Let's perform the addition. Okay, again, null pointer exception addition in the component apex command button. Basic calculator controller line number 9 and 1. What is the error? Line number, basic calculator line number 9 and did I missed something? Did I missed something? First number plus second. Did I missed any semicolon? I don't think so. My first number. Copy. Copy and paste. And paste. Did I missed some? Let's try to do it once again. 10, 20, addition. Okay. 10, 20, subtraction. Same thing. Class.basic calculator subtraction. So it's actually not working for anything. Let's try to refresh the cache. Let's try to refresh the cache. Let me evaluate the program once again. What I did. Okay. Let me do one thing. Let me add something. Re-render. इससे तो एरर नहीं है, हालांकि फिर भी चलो मैं करता हूँ. इससे तो एरर नहीं है, फिर भी ये री-रेंडर करके देख ले.
And I'll try to save this once again. Okay, so let's try this. Error उसकी वजह से नहीं था. Is there something that I'm saying? Basic controllers. Set up to false. Okay, yes, 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 yes. I was missing something from here. See what is happening? Yeah, what is happening is like, when you are entering the first number, when you are entering the first number, when you are entering the second number, although you are asking to perform the addition, subtraction, whatever you are asking, but then what's happening over here? What's happening? These value, the value of the first number and the value of the second number, like if it's 20, like it is 10, it should be get transferred. It should be get transferred to these first number variable, second number variable, and that is the reason we are getting this error. So what I am doing for that, I almost forgot this. तो मैं क्या कर रहा हूँ कि in the input text, if you are if you are saying कि भैया enter the first number, and somebody is entering the first number, तो ये value जा कहाँ रही है? We haven't written anything for that. We haven't written anything for that. राइट तो अब मैं यहाँ पे एक चीज और ओपन करता हूँ, एंड दैट इज वैल्यू कि भैया व्हाट यू आर एंटरिंग इनसाइड दिस टेक्स्ट, यहाँ पे जो भी आप एंटर कर रहे हो, दैट वैल्यू शुड बी गेट ट्रांसफर टू. अब भी देखो, अब यहाँ पे अपन अपने वेरिएबल्स का नाम लिखेंगे. सो दैट वैल्यू शुड बी गेट ट्रांसफर टू अगेन योर डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड देन लाइक दिस. ठीक है, एंड देन लाइक दिस. अच्छा, तो मैं थोड़ी देर के लिए रेंडर वाला पार्ट हटाता हूँ, बिकॉज आई नीड टू शो यू एल्सवेयर. मैं अलग से दिखाना चाहता था आपको, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम. और ये प्रॉब्लम को कैसे रिमूव करने के लिए री रेंडर होता है, तो मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ इसको. और वैसे भी इसकी वजह से एरर नहीं था आपको. इट वॉज नॉट लाइक कि आपको एरर इसकी वजह से आ रहा था. तो ये पार्ट मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ. ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे whatever you are entering in the first, जहां पर आपकी फर्स्ट नंबर एंटर करो, that should go to where? That should go to one of the variable called as first number. And so this value should be get transferred to one of the variable whose name is first number. This was the error. This was the error. And similarly, whenever you are asking user कि भैया तू second number enter कर, second number, where should this value go to? This value should automatically get transferred to this variable. That's the reason we were getting this error. That's the reason we were getting this error. And then after performing the operation result should come from where? It should come from the result. Now let me save this code and let's go to here. Let me clear the cache. How to clear the cache? Control Shift R. Control Shift R on the Chrome browser. On the Chrome browser. I don't know what is the shortcut for Mozilla and everything. For now 10 and then 20. Now perform the addition. See, the result is 30. Okay. Now perform the subtraction. See, the result is 10. Now perform the division, like multiplication is 200. Now perform the division somewhere around 0, because वो आपने क्या किया, 0 वाला नंबर लिया. हाँ, let's perform the division. It is 5. Modulus it's 0. ठीक है, 109. Modulus 9. If you are observing one thing over here, whenever I perform any operation, this complete page gets reloaded from here to here. If you observe this, when I perform the addition, see, the whole page is getting refreshed. When I perform subtraction, the whole page is getting refreshed. That means this whole information is coming from, the header section and everything that coming from the server again and again. Actually what I want, instead of that, it would be more feasible if only this section will be get refreshed, and rest of the thing would not be refreshed. अभी कैसा हो रहा है, पूरा पेज रिफ्रेश हो रहा है मेरा, पूरा पेज रिफ्रेश हो रहा है. And to avoid this to be get happen, now see, now let's see something. So there is a property called as re-rendered. तो what I will be doing over here कि ये जो मेरा किसको सिर्फ आउटपुट ऑपरेशन रिजल्ट जो है, वो उतना सेक्शन मेरा बस रिफ्रेश होना चाहिए ना. आई वांटेड ओनली दिस सेक्शन शुड बी गेट रिफ्रेश, है ना.
इफ यू वांटेड दिस टू बी गेट हैपन, तो क्या करना पड़ता है आपको? पहले तो उस सेशन को एक आईडी दो। तो मैंने उसको आईडी दिया। आईडी कुड बी एनीथिंग, आप अपने नाम से दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, प्रज्वल दे सकते हो, यहाँ पे सोहेल दे सकते हो, ठीक है। और सिंपल कोई सबसे अच्छी बात जो ऑपरेशन है वो दो। तो आईडी इक्वल्स टू रिजल्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई विल बी यूजिंग वन ऑफ द कीवर्ड ओवर हियर। अब मैं एक कीवर्ड यूज करता हूँ, ठीक है, एक प्रॉपर्टी यूज करता हूँ। द प्रॉपर्टी कॉल्ड एज री रेंडर, प्रॉपर्टी कॉल्ड एज री रेंडर, ठीक है, री रेंडर। और ये बोलता है कि किसको किसको रिफ्रेश करना है। तो आफ्टर परफॉर्मिंग एडिशन आई जस्ट वांटेड टू रिफ्रेश आरईएस। मतलब पूरा पेज रिफ्रेश मत करो, आप सिर्फ मुझे आरईएस को रिफ्रेश करके दो। आफ्टर परफॉर्मिंग द एडिशन, आफ्टर परफॉर्मिंग द सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन, आफ्टर परफॉर्मिंग द डिवीजन, ठीक है, जस्ट रिफ्रेश दिस पार्ट, जस्ट रिफ्रेश दिस पार्ट, दिस इज व्हाट आई वांट एंड गिव अ स्पेस ओवर हियर, ऑलवेज आफ्टर दिस गिव अ स्पेस। नाउ लेट्स ट्राई टू सेव दिस once again. Let's go back to this. Let's perform the division like 109 divided by 27, ठीक है। Second number is 27, sorry. Now you please closely observe, कि what is going to be happen. Addition, only this part. The page looks like to be the static. Subtraction, only this part. There's no changes in the whole page, है ना। Multiplication, only this part is refreshed. Division, only this part. Modulus, only this part. This is what a real time kind of real time out. So whenever we wanted only that particular portion to be get refreshed, instead of refreshing the whole page, if you wanted that this particular portion should be get refreshed, so aapko how you are required to program this? First of all, give an ID for that, and just use the property called as re-render property. So after addition, after clicking this button addition, this is going to be happen, and it will be refresh only res part. After clicking the subtraction button, this action is going to be get happen, and it will be going to refresh only this part. So this is something called as re-render. Re-render is a kind of property that's used to refresh the part. So we don't want it to refresh the complete page. Rather, we just want it कि यही हमारा जो part है, they should only be get refreshed. They should only be get refreshed, and the whole page data, whole page content should not be get refreshed. So this is how we are writing this code. ठीक है, तो ये मैंने क्यों लिया प्रोग्राम यहाँ से। काफी सारी चीजें आपने सीखी। फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट और आउटपुट, इनपुट लेबल्स और आउटपुट वैल्यू जो होती है, आउटपुट लेबल वो कैसे यूज करना, हाउ टू यूज द इनपुट टेक्स्ट एंड आउटपुट लेबल्स, है ना। दूसरा, व्हाट डज इट, हाउ व्हाट इज लाइक आईडी देकर रीरेंडर कैसे करवाना। तीसरा, कैलकुलेट, जो आपकी क्लास है वो क्लास से वेरिएबल्स कैसे ट्रांसफर करना, वैल्यूज वहां से कैसे लेके आना, ठीक है, फंक्शंस कैसे कॉल करना। दिस एवरीथिंग यू हैव लर्न विद दिस प्रोग्राम, राइट। सो एक्शन कीवर्ड का काम क्या होता है, उसके बाद में वैल्यू कीवर्ड जो होता है, यहाँ पे वैल्यू से काम क्या होता है। दिस एवरीथिंग यू हैव लर्न so with this program. So this is a kind of program जिसको आगे चल के हमें database interaction अभी करना है. We will be like in the coming days what we are going to write, we are creating the tables and everything. वहाँ कैसे वैल्यूज को कॉल करना, किस तरह से लेके आना, these everything would be required. तो ये जो आज प्रोग्राम लिया है, that's a good program to understand what we are going to do in the coming days. ठीक है, so do this and try to create some more things over here. ठीक है, एटलीस्ट वो नहीं हो रहा है तो ये जो आज बनाया वो तो भी आज कर लेना, ठीक है। एटलीस्ट डू दिस प्रोग्राम, इतना तो आप सभी लोग बना के रखिए, ठीक है।